Hello, students. We are going to wind up this theory of structuralism. I'm going to give you certain questions that I have framed on this chapter, on this theory, structuralism. But before going on to that aspect, it is very essential for you to understand that just following my lectures will not suffice. You will have to read the book as well. ठीक है, वरना आंसर राइटिंग आपको नहीं करने आएगी. फॉर एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग, आई एम रेफरिंग टू this particular book. ठीक है. Now in this book, as you can see in the very introductory portion, they have discussed how new criticism is analogous to structuralism. ठीक है. When you are going to write your answer, you will have to include such details also. इट विल हेल्प यू टू फेच मोर मार्क्स. ठीक है, तो इसी के लिए काफ़ी ज़रूरत है. दूसरी चीज़, आप और भी चीज़ें देख सकते हैं. इन्होंने रशियन फॉर्मलिज्म भी इस चैप्टर में डिस्कस किया है. दे हैव ऑल्सो डिस्कस द थ्योरी गिवन बाय रोमन जैकॉब्सन. ये सब चीज़ें इन्होंने बताया है, राइट. बट देन इन माई लेक्चर्स यू आर नॉट गेटिंग दीज थिंग्स. मैंने सिर्फ सारे जितने भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरलिस्ट हैं जिनकी थ्योरी समझना बहुत ज़रूरी है वो मैंने आपको बताया है, राइट. सो समझाने के पर्पज़ से वो सारे लेक्चर्स क्रिएट किए थे मैंने. इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर यू ऑल टू गो एंड रीड द टेक्स्ट. You can see, suppose they ask you this question, how you can find how you can draw parallelism between new criticism and structuralism. You would not be able to answer until and unless you read the chapter from the book, right. Moreover, suppose they ask you what is structuralism. अगर आप वहाँ ये लिख के आएंगे कि फॉर्म और कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान देना है तो इट वोंट डू. ठीक है, आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा. यू विल हैव टू गिव सम good language to your examiner, and because of this reason you will have to go and read the book. For example, अगर आपको ये जो व्हाट इज स्ट्रक्चरलिज्म में अगर ये जो मैंने हाईलाइट करके रखा है अगर आप इसको लिख के चले आते हो, स्ट्रक्चरलिज्म इज इंटरेस्टेड इन द रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर दैट रिजल्ट्स इन मीनिंग सिंस इट बिलीव्स दैट मीनिंग इज द इफेक्ट ऑफ कमिंग टुगेदर. तो ये सारा चीज़ आपको लिखना पड़ेगा. ठीक है, जब इतना अच्छा आप आंसर में लिखोगे तभी जाके मार्क्स मिलेगा. अदरवाइज यू वोंट गेट एनी मार्क्स फॉर थिंग्स दैट इज़ नॉट रिलेवेंट. ठीक है, आप हल्का फुल्का बता के आओगे, सरफेस लेवल चीज़ें आके बताओगे, उससे काम नहीं चलेगा. ठीक. मोर ओवर, सपोज यू आर गिविंग एग्जाम्पल ऑफ सोशो. ठीक है, सो एज यू कैन सी पहला चीज़ क्या लिखा है, फर्डिनांड सोशोज 1915 वर्क, अ कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स. नाउ आई डिड नॉट टोल्ड यू कि किस काम में यू आर एबल टू सी द कॉन्सेप्ट गिवन बाय हिम, दैट ऑफ लैंग एंड परोल एंड द साइन कॉन्सेप्ट, राइट. तो ये सब चीज़ें आपको फैक्चुअल डिटेल्स आपको बुक पढ़ के ही मिलेगी. दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी essential that you go and read the book. I'm not using any particular vocab that is associated with these theories. मैंने आपको सिर्फ समझाने के पर्पज़ से वो सारे लेक्चर्स बनाए हैं, तो ये बहुत एसेंशियल है कि आप जाके उसे खुद से रीड करें. आई हैव नॉट टोल्ड यू व्हाट इज़ सिंक्रोनिक स्टडी, और ये देख सकते हो, और व्हाट इज़ डाइक्रोनिक स्टडी. आई हैव नॉट डिस्कस दीज थिंग्स, राइट. मोरओवर, लैंग एंड परोल का भी डेफिनेशन मैंने बहुत ही लिमिटेड मैनर में दिया है. आपको ऐसी वे में लिखना पड़ेगा जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है. द सेट ऑफ रूल्स बाय विच वी कंबाइन वर्ड्स इनटू सेंटेंसेस, यूज सर्टन वर्ड्स इन सर्टन वेज, रूल्स विच आर लार्जली ऑल्टर्ड एंड विच ऑल यूजर्स ऑफ अ लैंग्वेज फॉलो. दिस ही टर्म्ड लैंग. Everyday speech where we use words in particular context, this he called parole. If we are going to give the example of ludo, that won't do. पहली बात तो लूडो का एग्जाम्पल आपको एग्जामिनेशन में देना ही नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के पर्पज़ से मैंने आपको बताया था, राइट. तो ये सब चीज़ें नहीं करनी हैं. आप समझ लीजिए थ्योरी को और आकर के बुक रीड करिए. ठीक है. Moreover, if they are going to ask you this question कि what is lang and parole, तो you can't go and say कि वो parole is something which you may call choice. नहीं, it won't do. ठीक है, आपको अच्छे से उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्या एक्चुअल में उसका मीनिंग है, राइट. तो दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू गिव योर आंसर. ठीक है, इसी वे में आपको आंसर देना पड़ेगा. मोर ओवर, एज यू कैन सी दिस राइटर he has said that in this paragraph we can now summarize 1 2 3
Fourth paragraph, we can now summarize the three principles regarding language that Saussure puts forward. अगर याद हो तो मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट ही बताए हैं. देखिए बताए मैंने दो ही कॉन्सेप्ट सोशोर ने दिए हैं, लेकिन उसको बाइफरकेट इन्होंने तीन पार्ट्स में कर रखा है. आर्बिट्ररीनेस, रिलेशनैलिटी एंड सिस्टमैटिसिटी. तो यू मे राइट दैट ही हैज़ गिवन टू कॉन्सेप्ट्स, बट देन इन ऑर्डर टू write the answer you will have to go through the book again. ठीक है. Okay. Now yes, you may also see that Russian formalism भी discuss किया हुआ है. तो maybe in your examination you may be asked what is Russian formalism. याद रखिएगा, because this is the book which is being followed by many students of masters. ठीक है. Even many teachers are following this book. तो हो सकता है आपको इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाएं, where they may ask you what is Prague Circle, what was the contribution done by them, blah blah blah. ठीक है. तो ये सब चीज़ें आपके कोर्स में हैं. Now let's move on to the questions framed on structuralism, right? Okay. So these are the questions that I have framed on the chapter structuralism. So you may click a screenshot, or maybe you can just go through the questions and answer it on your own. ठीक है. क्वेश्चंस ये थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस इजी लेवल के हैं, कुछ क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके डिफ़िकल्ट लेवल के हैं जिसका आंसर आप नहीं ढूंढ पाएंगे. ठीक है. तो ये सारे क्वेश्चंस आप कोशिश कीजिएगा, आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट आप इसे प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा. ठीक है. नाउ दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर. Thank you. So with this we are done. We have already finished structuralism. Now we are going to discuss post-structuralism and deconstruction in the next lecture. ठीक है. Okay. Thank you.